Now let's move on to the grammar portion of this exercise, where we are going to discuss the exercise of verb first. Use the correct form of the verb given in brackets in the following sentences. तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि इन क्वेश्चंस में, इन स्टेटमेंट्स में वर्ब की कौन सी करेक्ट फॉर्म यूज होती है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मैन फील हिज हेयर फ्लटर. द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर. द सेकंड स्टेटमेंट इज दे सी द ओल्ड सिटीज. दे saw the old cities. They look at their children. They looked at their children. The fourth statement is Laura stumbled through the settlement. Laura stumbled. Fifth statement is he drenched in the hotness of his fear. He drenched. Sixth statement is all the boards warped out of shape. तो यहाँ पे इसकी ये फॉर्म लगेगी, warped out. Harry moved into the metal. Harry moved. His wife appeared with his supper in a basket. His wife appeared. Ninth statement is the sons play songs on ancient flutes. The sons played. Next statement is they turned their backs to the valley. They turned their backs to the valley. तो हमने देखा कि इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा बल्कि जो फॉर्म यूज़ की गई है वो है पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, जो कि हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है. अब इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स में पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं ताकि उनका सेंस बन सके और हमें पता चल सके कि वो क्या मीनिंग कन्वे करें. पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स. द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स. Sir, dark people, yellow eyes, the Martians, very friendly, we talked a bit, not much, they learn English fast. अब देखें कि इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहा और हमें समझ नहीं आ रही कि सेंटेंस में आखिर बात क्या की जा रही है. द टाउन्स एम्प्टी. तो सबसे पहले तो हमने इसको कैपिटलाइज करना है क्योंकि ये पहला वर्ड है. द टाउन्स एम्प्टी, यहाँ हमने कॉमा लगाना है. बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, comma, sir, full stop. Dark people, full stop. Yellow eyes, full stop. The Martians. तो हमने यहाँ पे M कैपिटलाइज करना है. Full stop. Very friendly. Full stop. We talked a bit, not much. We talked a bit, comma, not much, full stop. They learn English fast. They learn English फर्स्ट. अब यहाँ पे एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, वो ये कि पता चल रहा है कि ये किसी के कहे हुए अल्फाज हैं, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट को हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखना है. हमने इसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स लगाने हैं. सो हेयर वी आर डन विद द एक्सरसाइज ऑफ पंक्चुएशन एज वेल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. दिस इज़ Huma, your English instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.